Topic: descending tracts of the spinal cord. Okay, so as I've already told you about the spinal cord in detail, right? The external features, the gray and white matter of the spinal cord, then the various nuclei, various funiculus, the lamellar organization of Rexet, that was all, and the spinal nerves, spinal segments, that was all discussed. Now we're going to talk about the descending tracts. As you know, tracts is a bundle of myelinated fibers within the CNS, and these fibers outside the CNS they comprise the spinal nerves. Within the CNS, they're called tracts. Now, these collection of white fibers within the CNS, according to the you know different nuclei, the direction in which they run, they named accordingly as association fibers, commissural fibers, projection fibers, right? Association fibers are those fibers, the white fibers within the CNS, which communicate with two nuclei, the two gray matter within the or the synapse within the same cerebral hemisphere ipsilaterally, within the same side, either in the spinal cord or within the CNS or in the brain, to the association fibers. Commissural is which are horizontally traveling, like communicating both right and left halves of the CNS, either in the spinal cord, communicating left to right, or in the brain. So those fibers which cross the median plane, they comprise the commissural fibers. Similarly, now the vertically running fibers which communicate with the nuclei from the cortical to the brainstem to the spinal cord or to the cerebellum, they are running vertically, right? So they are called projection fibers. They can be ascending, right, from the sensory portion, like from the receptors, they reach to the higher centers, then they are also projection, and from higher centers, when they descend down to the spinal cord, they are motor, and they're also projection fibers. So you got to know that there are three types of bundle of white matter. They're called tracts, and the association, commissural, and projection fibers. Now, if we're talking about descending tracts, that means we are talking about the projection fibers which descend from the higher centers, like supraspinal nuclei. In the spinal cord, in the anterior horn, the gray matter, that's called the nucleus of the efferent pathway. From there, anterior horn of the spinal cord, the lower motor neurons arise and they emerge out through the anterior spinal nerve rootlets, and to join to form the spinal nerve. So these, the nucleus of the efferent fibers lies within the anterior horn of the spinal cord. So if the fibers coming from the nucleus which is above the spinal cord level, like maybe in the pons, medulla, midbrain, cerebellum, or basal nuclei, or the cerebral cortex. So the fibers coming down from a nucleus above the spinal level. That's why they're called supraspinal nucleus. So from supraspinal nucleus, the fibers which reach to the spinal cord, they are called the upper motor neurons. And fibers which emerge from the anterior horn cells of the spinal cord, they're called the lower motor neurons. So here we're talking about the upper motor neurons. Take motor word we use because these are descending tracts, like efferent pathway. So this descending tracts we're talking is like fibers from the supraspinal nucleus which are reaching down to the anterior horn of the spinal cord. Got it? That is called a descending tract.
might be from cerebrum, might be from cerebellum, from the midbrain, pons, medulla, or from the basal ganglia. All those fibers converge down there in the anterior horn. This is called a descending tract. Now, you can see here this diagram. First of all, focus here, the white matter which we discussed. Because of this butterfly shaped gray matter, the white matter of the spinal cord is divided into three portions. This portion between the medial longitudinal septum posteriorly and behind the posterior horn, this is called posterior funiculus. And between laterally to the dorsal and ventral horn, this is the lateral funiculus, and this is the medial longitudinal fissure anteriorly. Between this and the anterior horn, it is this anterior funiculus. One thing you observed that the dorsal funiculus is not having any descending tracts. In this diagram, all the shaded areas are seen in the lateral and anterior funiculus. So that means descending fibers do not descend through the posterior funiculus. Others are listening me? Anuj, if you're not listening, I think the rest of listening. Try to concentrate. So this is the posterior funiculus. You don't find this is basically filled up with the ascending tracts. ठीक है, dorsal column कहते हैं. This is filled with the ascending tracts. So descending tracts या तो lateral funiculus में होगा or either in the anterior funiculus. Okay. Now let me tell you, among these different, you have lots of names written here about the descending tracts, right? Among these descending tracts, you have this one, the largest descending tract. Remember, this one is the largest descending tract, and this is called the highway of the descending tract, right? So this is the lateral corticospinal tract. So among these so many descending tracts, this one is the biggest descending tract, the lateral corticospinal tract. And it also have a subdivision here, that is the anterior corticospinal tract, which lies on the either side of the anterior longitudinal fissure in the anterior funiculus. So this is anterior corticospinal tract. This contains around 80 to 85% of the fibers of the corticospinal tract, and this contains around 15% of the fibers of the corticospinal tract. So this corticospinal tract is a highway. Let me tell you, because descending tracts are categorized into two headings. One is the pyramidal tract, and the other one is the extrapyramidal tract. Now, pyramidal tract is an evolved tract, like, it's a newer tract. If you talk about like evolution, this is more advanced, and the pyramidal tract is meant for the skillful voluntary movements of the skeletal muscles. Skillful voluntary movements, like the movements which we do with the fingers, like painting, drawing, music, right? So that's the corticospinal tract. Then there are various other tracts which control the posture of our body, equilibrium of our body, dynamic as well as static equilibrium of our body. ठीक है, बाइक चला रहे हैं तो भी बैलेंस कर रहे हैं, like walking कर रहे हैं, या even you're standing with your one leg, then also you're maintaining, or like you're walking on pebbles alongside the railway tracks. If you're walking on pebbles, then also you're maintaining your
posture. So all this, like, maintenance of equilibrium, posture, right, as well as reflex, voluntary or in reflex subconscious responses of balancing. Like, अगर हम pebbles पे walk कर रहे हैं and you start tilting to one side, you immediately, you raise your opposite hand, or you tilt your head to balance yourself, right? So these are reflex equilibrium responses. So that is all being, mediated through. It's not like a corticospinal tract is not maintaining all this. So extrapyramidal tract is actually helping or mediating this main tract, that is corticospinal tract. So extrapyramidal tract helps to maintain your reflex activities, reflex motor activities, like, किसी ने आवाज लगा दी पीछे से, you tilt your head behind, right? So in response to auditory, in even to visual stimulus, like if you're searching for someone, you keep moving your head accordingly, right? So ये जो visual reflex, auditory reflex responses, even, equilibrium responses, if you have, like, जरा सा भी हम कहीं पे disbalance होते हैं, you immediately, try to maintain the balance by tilting your spine, or the raising your hands, or like tilting your head and neck. So that's how, like, so this response is, through the extrapyramidal tract. And this extrapyramidal tract, if you think, this type of activities is seen even in lower animals. Have you seen like a cat running on the balcony wall? From one balcony to another balcony, those are thin walls on which these animals run. They can run. A cat can run so swiftly. Even you'll find it not easy to run on a thin wall at a high altitude. You may like be able to stand, but you will not be able to walk. Even, they can run on the rope. Monkeys even. So what you are getting, concluding here, that extrapyramidal tract is it's a primitive tract. It is an older tract. Means extrapyramidal has been contributing since ages, even in lower animals. While corticospinal tract, which is like being meant to, for skillful voluntary activities, so this one is advanced on a new tract, which is more developed in humans. Got it? So have this idea about corticospinal, and the corticospinal is also called pyramidal tract. The main purpose, pyramidal world is being derived here because of the pyramidal cells, right? Remember, the third and the fifth layer of the cerebral cortex, they're made by pyramidal cells, and pyramidal cells are the motor cells. Granular cells are the sensory cells. And even in the anterior horn of the spinal cord, you have pyramidal cells, and the largest one of them are called the bed cells. So because it's all connected through the pyramidal cells, we call them like corticospinal as the pyramidal tract. Apart from this, all the rest of the tracts which are descending down, they're called extrapyramidal. इसको इस तरह से भी imagine कर सकते हो, like as I said कि एक highway है, like, Lucknow to Agra. Let's say Lucknow to Agra is a expressway. So expressway is like 6 lane both the sides. It's a big tract. You can, like, within like the shortest distance, exactly the shortest and the widest distance. Yeah, direct Lucknow to Agra. But it doesn't mean if this tract is blocked or there are no other options left. There are other options as well. You can move to the different cities, why you can connect via different cities also to reach the destination. Like Lucknow to Agra, you can move by, moving to Kanpur, Etawah, and Firozabad, and that's how Tundla and all. You can, you can have a journey by multiple stoppages in between, instead of having the fastest track.
but that will be, you know, a polysynaptic tract. You know what I mean is extrapyramidal tract is a parallel tract to the pyramidal tract, and it is a polysynaptic course. ठीक? Here what you're talking about is pyramidal, right from the higher centers cerebral motor cortex, they descend down right to the anterior horn of the spinal cord. But the rest of the extrapyramidal fibers, they have polysynaptic course. They synapse in between, and then they reach to the anterior horn. So ये parallel है and polysynaptic course है. ठीक, बट इट डजंट मीन कि हम जैसे असेंडिंग में बात करते हैं, असेंडिंग ट्रैक्स में यू हैव फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन फ्रॉम द रिसेप्टर reaching through the dorsal horn of the spinal cord to the dorsal horn, where it might synapse with the second order neuron. From second order it might reach to the brain stem, from brain stem then third order to the thalamus, or from third order thalamus to further basal nuclei, or to then fourth order from there to the cerebral cortex. So you have different successive orders, like polysynaptic is also, the ascending tracts are also polysynaptic. Descending में भी ये polysynaptic जितने भी extra pyramidal हैं, they have they have contribution from other sources, while it until it descends to the spinal cord, it has contributions from adjacent nuclei. So it's a polysynaptic tract, and pyramidal is right from cerebral cortex down to the spinal cord. ठीक? And remember, till now in this lecture we all be talking about this upper motor neurons. ठीक है, अभी तक tracts का मतलब ही है, tracts means the fibers running within the CNS. ठीक है, so we just focusing on the upper motor neurons. एक बात और है वो ये कि some authors have written as that the descending tracts are also in three order neurons. They actually include the internuncial neurons, like when these upper motor neurons or the nuclear neurons from the supraspinal nucleus, when they reach to the anterior horn, they actually synapse with the internuncial neurons. And why the internuncial neurons? They actually act on the lower motor neurons present in the anterior horn of the spinal cord. So these internuncial neurons actually इनका जो पर्पस है, they actually trim the impulse. क्योंकि impulse जो ऊपर से आया है, and anterior horn has a lot of thousands of neurons. So that has, if that impulse is stimulating all the lower motor neurons at that particular spinal level, like let's say C5, C6, right? So C5, C6 is biceps, deltoid, and even triceps. ठीक है? Even your teres minor, supraspinatus. So it doesn't mean कि अगर ऊपर से impulse आई higher center से, upper motor neuron से, and if it directly synapses with the anterior horn cells, so it might like influence both flexors and extensors. Getting my point? If impulse descending down from the higher centers, if directly it synapses with the lower motor neurons of the C5 or C6 segments, it might cause flexion and extension. It might stimulate the flexors and extensors of that segment, like let's say arm. So there will be like not a smooth coordinated movement नहीं होगा, right? तो इस वजह से you have internuncial neurons. Internuncial neurons inhibit the impulse being transmitted to the neurons of the extensor muscles. When you are doing a flexor response, the impulse coming from the higher centers will be inhibited from reaching the axons which are running through the radial nerve, let's say. If it has to, like you're flexing flexing the elbow, right? So if you're flexing the elbow,
the impulse from the higher center has to reach only to the biceps and brachialis. But the spinal segment is same for radial nerve also. Radial nerve also includes 5, 6, 7, 8, T1. And and this musculocutaneous nerve is also C5, C6, C7. So at that same level, the impulse has to be trimmed, that it should be stimulatory only to the flexor muscles and inhibitory to the extensor muscles. And for that purpose, these upper motor neurons coming from supraspinal nucleus, they initially synapse with the internuncial neurons, and via internuncial neurons, now they stimulate the lower motor neurons. So this purpose of internuncial neurons is trimming of the impulse coming from higher centers. I hope you understood this. Then इन्हीं चीजों में कंट्रीब्यूट करता है एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट भी, राइट? एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट also contributes by stimulating or inhibiting these alpha and gamma motor neurons present in the anterior horn of the spinal cord. ठीक, अब ध्यान से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताया है मैंने. Now let's see actually the location of these descending tracts in the anterior and lateral funiculus. This you've got to know that this is the largest tract. Lateral corticospinal tract is found just lateral to the dorsal horn in the lateral funiculus. Remember this position, because let me tell you, they'll just, you know, in an exam these days, images based questions are also coming. So they might point to one of the tracts and ask you from among the 4 choices that which tract is this, let's say. Take. So that's why, you know, you have to grasp these images to know the exact location of these descending tracts in the white matter, because pointers are labeled and you tagged and you are asked to identify the descending tract. So make this habit, because ये MCQ purpose of my university exams भी आ रहा है. So image based questions के लिए, you know, you have to have this idea from where exactly these descending tracts are running. Just immediately lateral to the posterior horn in the lateral funiculus, it's the biggest tract, lateral corticospinal tract. And as I told you, on either sides of the anterior fish longitudinal fissure, you have this anterior corticospinal tract. Take. Then immediately lateral, you know, iske baad, the rest of the names I'll be calling now, they will be all extrapyramidal tracts. So immediately lateral to the lateral horn, you will find is lateral reticospinal tract. ठीक है, immediately lateral. तो इसमें word तो lateral लगा ही हुआ है. ठीक है, तो remember lateral reticospinal tract is immediately lateral to the lateral horn of the spinal cord. However, medial reticulospinal tract is medial. देखो इसमें lateral word use कर लिया, इसमें medial होता तो it's medial to the anterior horn of the spinal cord. ठीक है, not ventrally but a little dorsally, you know, because tectospinal tract is a little more anterior to the medial reticulospinal tract. ठीक, तो ये है medial reticulospinal tract की position. अब ruberospinal tract is also easy, I think, क्योंकि जो हाईवे है उससे जस्ट उसके सराउंड करता है. कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट इज सराउंडेड एंटेरोलेटरली बाय दिस रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट. फिक्स दिस लोकेशन इन माइंड. एक बार ध्यान से देख के एक रफ पेज पे, आफ्टर गोइंग थ्रू दिस टॉपिक, ड्रॉ दिस डायग्राम. ठीक है,
So that will help you learn this position. So rubrospinal is anterolateral to the corticospinal tract, lateral corticospinal tract के ऊपर, adjoining, laterally, rubrospinal tract. ठीक? Then this tract here, anterior to the anterior horn, right? Anterior to the anterior horn is vestibulospinal. ठीक? Okay? And medial to the tip of the anterior horn is tectospinal. इन दोनों की एक और बात इंपॉर्टेंट है कि ये सर्वाइकल सेगमेंट्स में ही मिलते हैं. ठीक है, तो इस तरह से क्या है, इफ यू टेक अ सेक्शन थ्रू द thoracic और lumbar segments, you might not see these tracts. They'll descend down only in the cervical segments. ठीक है, तो tectospinal and vestibulospinal tract, basically they're meant to, to tectospinal tract is to reflects movements of your head and neck in response to a visual stimulus. So tectospinal tract भी रहेगा, and vestibulospinal tract is similarly reflects movement of head and neck in case of balancing, like balancing के लिए. So vestibulospinal and tectospinal seen in the cervical segments. Vestibulospinal lies immediately anterior to the anterior horn, and tectospinal is immediately medial to the tip of the anterior horn. Okay. Then lastly, anterolateral word एक use होता है. Anterolateral you use for olivospinal tract. Olivospinal tract position क्या है? Is anterolateral, or you can say just lateral to the ventral nerve rootlets. This is the ventral nerve rootlet. So immediately lateral to the ventral rootlet is olivospinal tract. Okay, so you have seen the location of these different descending tracts traveling through the white matter of the spinal cord. Okay, now we will discuss about the main pyramidal tract. ठीक? Pyramidal tract, as I have told you, they arise from the pyramidal cells of the cerebral cortex, cerebral motor cortex. ठीक है? Mainly from which area? The cerebral primary motor cortex is area number 4, and that is precentral gyrus. So from precentral gyrus, that is area number 4, you will find that majority of these fibers are coming down from the precentral gyrus area number 4, and also from premotor areas, especially area number 6. But don't forget that there are 6 layers in the cerebral cortex. It might be sensory or motor. Cerebral cortex has 6 layers. But in case of sensory cortex, there will be more of granular cells. And in motor cortex, there will be more of pyramidal cells. It doesn't mean that motor cortex will not be having sensory neurons. It doesn't mean that sensory cortex will not be having pyramidal cells. Got it? So just 6 layers hain, that will be maintained in both sensory and motor cortex. ठीक? तो sensory cortex से भी there are axons descending down. ठीक है? Axons reach down from the areas I have told you, primarily from the area number 4, that is precentral gyrus. Premotor is area number 6 and 8, and 312 is from the sensory areas of the cortex, that is postcentral gyrus. Now that area precentral gyrus, if you see in a coronal section that will be taught to you later on, that's called motor homunculus. Motor homunculus is
like the arrangement of body areas, depiction of body areas in the motor cortex, like your head, your face, your tongue, then your neck, then your thumb, the areas which are having more of representation in the motor homunculus will be having more precisely controlled, because they have a bigger representation, more number of neurons for control of those areas. So if you see a motor homunculus, you will find a big tongue here. That means there are a lot of neurons reaching to the tongue. You have so many different movements. Then for the thumb also has a big representation. And by the time you reach this medial border, supromedial border, you will find the knee joint here. The knee joint and your leg, that is seen on the medial portion of the cerebral cortex. The leg area is seen on the medial portion. Take, as well as you will also find, because descending tracts, they also control there are autonomic descending tracts also, right, for the control of the viscera. So the bladder and bowel, like rectal, anal sphincters, the ureteric sphincters. So bowel and bladder is also represented here at the supromedial border of the cerebral hemispheres. Okay? That area is paracentral lobule. I'm emphasizing here because these are some important points. Questions generally come on these type of things. And the blood supply of this area is anterior cerebral artery, medial surface of the cerebral cortex. The blood supply is anterior cerebral artery, and it reaches to perfuse adjoining around 1 centimeter to 1 inch on the supralateral surface as well. This area is perfused by anterior cerebral artery. Then the rest of the anterolateral, lateral or supralateral, the better word is supralateral surface, this much area is being perfused by middle cerebral artery. So in case of anterior cerebral arteries, many times asked, like infarction of the middle infarction, hemorrhage of anterior cerebral artery will lead to bowel bladder disturbances as well as paralysis in the lower limbs. Got it? Anyway, so the fibers from there, the motor cortex, they will descend down, and converge in the posterior limb of the internal capsule. Because look here, it's a wide area of distribution. So the fibers, actually, if you'll say that, they're fanning out fibers from below. If you'll see, they'll be distributed out like this. But if you say from above, they are converging down to this, compact area interpressed between, this lentiform nucleus and caudate nucleus, corpus striatum. This is corpus striatum, head of caudate nucleus, lentiform nucleus, and medially you have thalamus. Take this compact area of white matter, a bundle of tract interpressed between corpus striatum and thalamus. This is called internal capsule. Okay? Between caudate nucleus and lentiform nucleus, this is the anterior limb of internal capsule. Between thalamus and lentiform nucleus, this is the posterior limb of internal capsule, and this portion between the anterior and posterior limb is called the genu. So my purpose of telling is that the pyramidal the fibers descending down through the cerebral cortex for the limbs, or you can say the entire trunk. Okay? We are sparing the head and neck, exactly the neck muscles. We are just talking about the
fibers which have to descend to the spinal cord, right? So they'll descend down mainly through the posterior limb of the spinal cord. Okay? And that because these fibers are spreading out to the cerebral cortex and bundling in one particular area, in thinned out area. So it's like a bouquet. Like in a bouquet, you tie all the roses and the flowers at one point, and they're distributed, spread out like a crown. So that's why this represents that a bouquet form, and that's why it's called corona radiata. Corona literally means, is referred to the crown. Like these days we have a virus named corona. So this is corona radiata. Corona you must have heard in other places also in anatomy. Can anybody tell me any other place you have learned about corona in anatomy? Yes, the secondary oocyte which is liberated from the ovum during ovulation, that also has granulosa cells on the peripherally attached, and those cells are called corona radiata. Exactly. So corona radiata is related to the liberated ovum, and corona is also another name for the glans, the border of the glans penis. The border of the glans penis is also called corona, like uh, crown shaped. Similarly, here it's called corona radiata. Okay. Then from the posterior limb of the internal capsule, they will now descend down to the brain stem. So in the brain stem, we're talking about the midbrain, they will pass through this portion called the crus cerebri. Thick. So the corticospinal tract descends down to the crus cerebri of the midbrain. Then in the basilar part of the pons, they will cross to the basilar part of the pons. And one thing, because basilar word aaya hai, so let me tell you, during the development of CNS from the neural tube, there are basically LR and basal lamina. Basal lamina is, just the name suggests, it's basal, right? Basal, if you talk about your neural tube hota hai, embryo mein, to basal means something more ventral, right? So all the motor neurons, motor nuclei, motor tracts, even just now you saw the spinal cord, motor tracts ये हैं, motor nuclei जितने भी हैं, they will be facing towards the ventral surface of the CNS. ठीक? क्योंकि LR lamina में जो the laterally placed LR lamina होता है, उसमें से you have the sensory tracts running. So the sensory tracts occupy the dorsolateral position of CNS or the brainstem and spinal cord. Let's say brainstem and spinal cord में the sensory, अभी ये distribution of cranial nerves, we'll talk about the cranial nerves, then also वहाँ पे भी ये pattern मिलेगा. Because the sensory nuclei, even the nuclei of the cranial nerves in the brain stem, the sensory nuclei, they are placed dorsolaterally, or ठीक है, or laterally. Actually pons के level पे there is like पीछे की तरफ fourth ventricle खुल जाता है medulla में, pons में. So वहाँ पे the sensory nuclei are located ventrolaterally. Otherwise these motor nuclei, motor tracts, you will find in the ventral portion of the brainstem and spinal cord. अभी spinal cord में तुमने देखा है कि dorsal funiculus was not having any tracts, descending tracts, only in the anterior and lateral funiculus. So यहाँ से ये बात भी इस तरह से एक बेसिलर से याद आई, तो कि बेसल लमाइना में ही डेवलप होते हैं. आई थिंक तुम्हें डेवलपमेंट इसका पढ़ाया जाएगा embryology में CNS का. You'll have a better idea then. So basilar part of the pons is occupied obviously with the descending tracts. Corticospinal tract descends to the basilar part of the pons. And in medulla, now this is the upper medulla. So in the upper medulla, you will find there are bulgings anteriorly, and these are called pyramids. ठीक?
Now, in the lower medulla, what is happening? The important thing is that's happening with this corticospinal tract, which was descending down as a one unit up till the upper medulla, up till the pyramids of the medulla. Now, after the pyramids, in the lower medulla, you will find that 80% 80% of the pyramidal fibers move to the opposite half, opposite side, move to the white matter of the spinal cord of the opposite side. लोअर मेडुला से ये मेडुला ऑब्लोंगाटा में पिरामिड्स जो हैं, एक्चुअली पिरामिड्स थोड़ा लोअर, हाँ एक्चुअली ये पिरामिड्स लोअर मेडुला पे पहुंच जाएंगे. उसके बाद इन द लोअर मेडुला, हेलो ये क्या हुआ, आर यू ऑल कनेक्टेड, आर यू ऑल कनेक्टेड? There are new suspicious file entries in your quarantine folder that are yet to be submitted to research lab. I don't know, ये message आ रहा है screen पे. Anyways, so 80% fibers from the pyramids, they move to the contralateral side into the white matter that is lateral funiculus of the spinal cord, and I just told you the position that is lateral to the posterior horn of the spinal cord, while the remaining, I mean the 15% fibers, 15% fibers, they descend down straight in its course and continue to follow the same course without being crossed. They descend down to the particular spinal segment to which it belongs. ठीक है, अगर अपर लिम्ब के हैं तो सर्वाइकल लीजन तक डिसेंड करेंगे, सर्वाइकल बल्जिंग्स में. लोअर लिम्ब के लिए फाइबर्स आ रहे हैं यहाँ से, लोअर लिम्ब के यहाँ से फाइबर्स आएंगे तो वो लंबर सेकल सेगमेंट्स तक डिसेंड करेंगे. अपर लिम्ब का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे होगा, यहाँ से फाइबर्स आएंगे तो वो पहुंचेंगे कहाँ तक, सर्वाइकल सेगमेंट्स तक की. तो कहने का मतलब ये कि the anterior corticospinal tract, they are uncrossed fibers or ipsilateral fibers reaching to their particular spinal segment, and on that particular spinal segment, like you know, let's say कि ये C5 fibers आ रहे थे upper limb के, sorry C5 के लिए हम बात करें, let's say C6 C7 fibers हैं for the thumb. तो ये फाइबर जो हैं C6 C7 पे जा करके C6 पे, they will now decussate, or you can say cross to the anterior horn of the opposite side or that particular level, and you know ये कमीशरल बैंड बनेगा. यहाँ से ये एंटीरियर वाइट कमीशर था ना, तो चूंकि कमीशरल फाइबर्स क्रॉस लेफ्ट टू राइट, ठीक है, यहाँ पे भी क्रॉसिंग हुई है तो इसको भी कमीशरल फाइबर्स कहेंगे, बेसिकली डिकसेटिंग फाइबर्स कहेंगे. कमीशरल तो डायरेक्ट हॉरिजॉन्टली रनिंग होते हैं लेफ्ट टू राइट, decussating fibers actually the pyramidal fibers, but they are moving to the opposite side. Now this is called decussating fibers. Okay. Similarly, the anterior longitudinal fibers, they will decussate to the opposite side at that particular spinal level onto which the spinal nerve, that neuron belongs to which segment. Okay. However, there are still some fibers, that around 5% fibers, क्योंकि 80 तो ये हो गए, 15 ये हो गए, there are 5% fibers, they still don't cross, ठीक है, and they continue in the lateral column, continue with the lateral horn, right, they do not cross of the lateral horn of the same side. ठीक है, तो इस वजह से ये important point है कि 80% fibers decussate at the pyramidal decussation in the lower medulla, and 15% corticospinal fibers, they do not decussate there, they continue in the same side up till this particular spinal segment, then they decussate to the opposite side at that particular spinal level. However, 5% fibers, only the 5% fibers are there which do not decussate. ठीक है. Then एक बात और बताएं, ये जो इप्सिलेटरल फाइबर्स हैं जो डिकसेट नहीं करेंगे, ऐसे फाइबर्स एक्चुअली
सर्वाइकल रीजन में ही ज्यादा होते हैं टू सप्लाई द नेक मसल्स। ठीक है, नेक मसल्स का रिप्रेजेंटेशन बाइलेटरल होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे, हालांकि लेट मी टेल यू, बाइलेटरल का मतलब नहीं 50-50, मेजॉरिटी इज ऑफ कोर्स बीइंग क्रॉस्ड, बट स्टिल द नेक मसल्स हैव बाइलेटरल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, हम ये तुमको हम facial nerve, Bell's palsy, remember I have already taught you about Bell's palsy, supranuclear infranuclear lesions. ठीक है, the supranuclear lesion, when I was teaching about Bell's palsy, that I told you there was a bilateral representation. So head and neck region में ज्यादातर bilateral representation होता है, because when we are talking about supranuclear fibers, upper motor neurons. And अब ये यहाँ पर आएंगे तो जैसे बताया था, they will synapse with the internuncial neurons. They will synapse with the internuncial neurons. And through that internuncial neurons, they will stimulate the alpha and gamma motor neurons of the anterior horn. And from there, these are the lower motor neurons which will emerge out through the ventral nerve rootlets and will join the nerve as lower motor neurons. Okay? So this all thing has been evolved for the purpose of to control the fine skilled movements. Okay, like skilled movements, maybe to response of anything, like you have to hold a pen and write something which you are thinking in your mind. So the thing you are imagining is because like you have to write capital letter A. तो कैपिटल लेटर ए अगर आप लिखोगे तो आपको या तो किसी ने ऑडिटरी रिस्पॉन्स दिया है, किसी ने डिक्टेट किया है। ठीक है, तो विद दैट ऑडिटरी स्टिमुलस and because of your past experiences you know how that capital letter A has to be written, or that might be a visual stimulus. visual stimulus में जैसे आपको परफॉर्मा दे दिया गया है, परफॉर्मा में लिखा हुआ है राइट योर नेम। अब किसी का नाम अभिषेक है तो पहले तो वो कैपिटल लेटर ए लिखेगा, किसी ने कहा नहीं, लेकिन विजुअल स्टिमुलस मिला उसको, उस पर लिखा था राइट योर नेम, तो उसको दिमाग में पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं तो उसने कैपिटल लेटर ए से स्टार्ट किया। दैट इज हाउ लाइक आई एम टेलिंग यू वॉलेंट्री स्किल्ड मूवमेंट फंक्शन। ठीक है, या कोई म्यूजिक की टोन बनानी है, गिटार बजाना है, तो with that collection of memories, with the collection of information in your mind, you move your skillful movements of muscles. ठीक है, especially in the distal limbs, especially the hand and your lips and tongue. मैंने बताया ना, ये जो vocabulary है हमारी articulation speech है, इसमें कितना सारा आर्टिकुलेशन है। इसीलिए मैंने बताया था मोटर होमनकुलस में टंग का, लिप्स का बहुत बड़ा रिप्रेजेंटेशन है। यू कैन सिंग, यू कैन शाउट, यू कैन शो रेज, यू हैव डिफरेंट सॉर्ट ऑफ, यू कैन अपनी ही वॉइस को यू कैन ट्रिम आउट द वे यू वांट। ठीक है, तो कहने कहीं लिप्स का, टंग का एंड द हैंड्स, द डिजिट्स, इसका बहुत बड़ा रिप्रेजेंटेशन है कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। ठीक, so as to be a evolved function. Cortico controls voluntary fine skill movements. एक थोड़ा सा और डायग्राम देख लें to make it more clear. This is corona radiata. This is motor homunculus area number 4, although it receives fibers from premotor area number 6 and sensory, primary sensory area number 3 to 1, that is postcentral gyrus. So these fibers, they come to this internal capsule, pass through the internal capsule. This is lentiform nucleus, this is caudate nucleus, this is thalamus, this is the posterior limb of internal capsule. Then this is the crus cerebri of the midbrain, then the basilar part of the pons, then the pyramids. This is the pyramid. Let's see, ये यहाँ पे दिखाया है, इसी का सेक्शन है यहाँ पे midbrain का. This is called the crus cerebri. ठीक है, and then descending down, they pass through the basilar part of the pons, then through the pyramid, the bulgings anteromedially in the medulla is called pyramid, so they pass through the pyramids, and then through the lower, at the level of lower medulla and continuing in spinal cord,
now you'll see the thickness also has to be appreciated, that majority around 80% fibers you can see they descend down now in the spinal cord to form the lateral corticospinal tract. Thick. So the fiber was anteriorly here, so it has moved down laterally, and from here it has moved down laterally here. Now because it was a projection fibers there, but because they're moving opposite directions, now that's called decussation. So decussation, this is motor decussation, and this is also called pyramidal decussation at the lower medulla. However, 15% fibers, they do not cross, they continue down straight in the anterior funiculus, just adjacent, remember yaad hai iski position, adjacent to the anterior longitudinal fissure in the same side. And can you see there are internuncial neurons, and they decuss that these anterior corticospinal fibers also decussate at that particular spinal level to which it belongs. Then they also move to the opposite side through the white commissural band, and then through the internuncial neurons they stimulate the alpha and gamma motor neurons for that particular skeletal muscle. Okay, so I believe you have got understood this corticonuclear corticospinal tract. This is another way of showing, because let me tell you, this percentage of fibers, you will find some difference with different authors, but in a nutshell, that majority, let's say 80 to 90%. Can you see this is pyramid of the medulla, and this is the spinal cord. This spinal cord is a higher level, and this is the lower level of the spinal cord. So what you're seeing is that from the pyramids, you can see that bulk of neurons, like 80% of the neurons, they have decussated and reached on the lateral side of the opposite contralateral side of the spinal cord in the lateral white matter. 80% to 90% fibers. Okay, this is how. But then, as I said, 15% fibers, यहाँ पे 8% लिखा हुआ है, but among these two, obviously, the fibers which are uncrossed, among them, majority of the fibers will descend down into the anterior column of the white matter of the spinal cord, that is called anterior corticospinal tract. However, these fibers, you can say, they will decussate at particular spinal segment and reach to the contralateral side, to the anterior horn of the opposite side. But as I said, only 5 to 2% fibers, they continue on the same side as the lateral corticospinal tract without crossing at any level. They simply stimulate the anterior horn cells of the same side, जहां से वो जिस साइड के cerebral hemisphere से आ रहे थे, उसी साइड के axons to stimulate. So the fibers, if stimulated of the same ipsilateral side to which the fibers were coming from that particular cerebral hemisphere, they stimulate the fibers of that side of the spinal cord, anterior horn cells of the spinal cord. They are the minimal fibers, around 2 to 5%, and they will travel down in the lateral corticospinal tract of that side. And this is happening mainly into the, बताया था, in the cervical segments. Okay, तो ये भी तुमने देख लिया है, corticospinal tract is done. पर्पस क्या हो गया, याद करना है एक बार समरी में, कि ये सब जो इवोल्यूशन हुआ है ये हमारे लिए किस लिए, वॉलेंट्री स्किलफुल स्मूथ एक्टिविटीज के लिए. ठीक, अब ये इंपॉर्टेंट है, मेक श्योर यू लर्न दिस बाय हार्ट. ये अभी तुम्हारा मेडिसिन, सर्जरी, पोस्टिंग्स में बहुत काम आएगा.
पीडियाट्रिक्स में भी काम आएगा। सो अपार्ट फ्रॉम दैट, ये तुम्हारे एग्जाम में, एनाटॉमी में एग्जाम में क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का, दैट इज डिफरेंशिएशन बिटवीन अपर एंड लोअर मोटर न्यूरॉन पैरालिसिस। ठीक, तो अभी जो ये तुमने देखा पाथवे, दैट वाज ऑल अबाउट अपर मोटर न्यूरॉन्स from the supraspinal nucleus to the anterior horn of the spinal cord, and from the anterior horn of the spinal cord they will reach to the effector muscle, that is lower motor neurons, and some authors call it there's a sending pathway into 3 order neurons. They say that from the supraspinal nucleus to the internuncial neurons, it's first order descending neuron, first order motor neuron. Then internuncial neurons, they call it as second order neurons. And from internuncial, because internuncial stimulates this now the alpha and gamma motor neurons, the lower motor neurons in the anterior spinal cord, anterior of the spinal cord. So they call them, which emerge into this, ventral root of the spinal nerve. They are the third order neurons. Some authors have written it as that the descending pathway is also into 1, 2 and 3 order neurons. Okay? But when we'll talk about upper and motor lower motor neurons, we do not consider talking about internuncial neurons. We simply say the fibers coming from supraspinal nucleus up to the anterior horn, that is upper motor neuron, and from the anterior horn which emerge out through the ventral root of the spinal nerves, they are the lower motor neurons. ठीक, अब इंजरीज की बात करते हैं। ठीक है, इसमें इंजरी दोनों में हो सकती है। पेरिफेरल के तो बहुत सारे, ट्रॉमा इज आल्सो वन रीजन, लाइक या कोई ट्यूमर या एनी हाउ इस्चीमिया एंड नर्व कंप्रेशन, न्यूरोप्रैक्सिया, न्यूरोन्टोमेसिस, एक्सोन्टोमेसिस। ठीक है, तो सो लॉट ऑफ नर्व रिलेटेड कंडीशंस मिलेंगी, इवन डायबिटीज एंड ऑल, बहुत सारी वो होती हैं conditions in which lower motor neurons get involved. But in case of upper motor neurons also, because of arterial causes, because of ischemia, clot, cerebral hemorrhage, ठीक है, there are also chances of injury to the upper motor neurons. ठीक, so what will happen now, the differentiation between upper and lower motor neurons we are talking about. Let's see what will happen if in case the lower motor neurons are injured. तो इसमें क्या होगा अगर इंजरी होती है, कंपैरिजन बिटवीन लोअर मोटर न्यूरॉन्स एंड अपर मोटर न्यूरॉन पैरालिसिस। ठीक है, तो लोअर मोटर न्यूरॉन की इंजरी होगी ऑब्वियसली, तो नर्व के लिए कोई इम्पल्स नहीं जाएगी। अगर हमारे पास नर्व स्लाइसिंग हो गई है, ठीक है, जिसे कहते हैं न्यूरोन्टोमिसिस, नर्व कट गई एकदम, स्प्लाइस्ड, so obviously there will be no impulse reaching to the muscles, so there will be complete abolished, muscle tone is abolished, है ना। it depends कि न्यूरोप्रैक्सिया टाइप ऑफ इंजरी है, जैसे ट्रांजिएंट लॉस ऑफ कंडक्शन हो जाता है, तो उसमें इट कैन बी रिगेन, राइट। बट इनिशियली हम बात कर रहे हैं लो मोटर न्यूरॉन पैरालिसिस में, कि इसमें पैरालिसिस होगी, इंजरी होगी, तो मसल टोन विल बी अबॉलिश्ड, because muscle tone also is maintained, अभी बताया, by the extra pyramidal tract as well as ये जो सेरिबेलम है वहां से भी फाइबर्स आते हैं। तो मसल टोन जो है वो, अगर लोअर मोटर न्यूरॉन चला गया तो कोई इम्पल्स ही नहीं जा रही ना, तो मसल टोन इज अबॉलिश्ड। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अपर मोटर न्यूरॉन की अगर इंजरी होती है, but because of those so much of internuncial neurons, like हम अगर corticospinal tract की बात करें, इंजरी हो भी गई, but I told you parallel रास्ते तो है ना, तो extra pyramidal tract से impulses पहुंच रही हैं। So muscle tone rather, क्योंकि to compensate for the losses, muscle tone is actually increased, ठीक है। इस वजह से इसको कहते हैं flaccid paralysis, यानी कि the limb becomes, the muscle becomes flaccid, ठीक है।
The reverse is happening in upper motor neurons because of increased muscle tone. There leads to be a spastic paralysis. अकड़ जाएंगे हाथ पांव उंगलियां digits whatever जिस चीज में paralysis हुई है, that portion that of the limb, that part of the body undergoes into a spastic contraction. Here, I mean, if you see the uh, you know regular life में, disability point of view, if you think, both are actually disabling you. Both are actually leading to a disability. You even if this spasm of muscle is increased, then also you'll not be able to work. And even if it becomes flaccid, then also it's not working. Thick. So both of them leads to deformities. मस्कुलर एट्रोफी लेटर ऑन, क्योंकि मसल पे जब नर्व इम्पल्सेस नहीं पहुंचती हैं, उसकी कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी खत्म हो जा रही है, विद टाइम दे विल लीड टू थिन आउट, वीकन आउट, यानी कि उसकी जो मसल है, उसका जो नरिशमेंट है, दैट आल्सो विल डाई आउट विद टाइम. यू विल फाइंड आउट थिन्ड आउट मसल्स. दैट इज कॉल्ड मसल एट्रोफी will be seen in lower motor neuron later on. Upper motor neuron में, because the tone is increased, right, the impulses are reaching, because that has to be in a spastic contraction, the impulses पहुंच रही हैं, but remember, not in a controlled manner. यानी कि जैसे मैंने बताया, अगर flexors and extensors both are being stimulated at that spinal segment, तो वर्क किस तो नहीं होगा ना. इफ यू वांट टू फ्लेक्स योर डिजिट्स एंड एट द सेम टाइम मीडियन नर्व एंड रेडियल नर्व बोथ आर बीइंग स्टिमुलेटेड, तो फिर डिजिट्स को फ्लेक्स करना आसान नहीं होगा. You have like extensor muscles supplied by radial nerve, at the same time flexors of the interphalangeal joints by median nerve. So both the muscles being stimulated, तो वही तो हो गया ना ये spasm. वर्किंग तो नहीं हुई स्मूथ. तो उस तरह में क्या है कि इंपल्स पहुंच रही है, तो मसल टोन मेंटेन्ड रहेगी एंड मसल एट्रोफी नहीं होगी. इस बंदे के हाथ पांव सूखेंगे नहीं, जो पैरालाइज्ड एरिया है. इसमें क्या होगा, यू विल फाइंड वीकनिंग ऑफ द लिम्स. ध्यान से समझ लेना, बिकॉज फर्स्ट टाइम व्हेन यू विल रीड, उसी टाइम सबसे ज्यादा समझ में आता है. अगर फर्स्ट टाइम तुमने रफली रीड कर लिया है जल्दी जल्दी में, तो फिर सेकंड टाइम थर्ड टाइम में इतना ग्रास्प नहीं करते. तो फर्स्ट टाइम अच्छे से समझते रहो, पढ़ रहा हूं मैं, सुनते रहो, उसके बाद एक बार रीडिंग लगा देना खुद से. देन रिएक्शन ऑफ डिजेनरेशन इन सीन, वही चीज है, रिएक्शन ऑफ डिजेनरेशन. जब डिजेनरेशन हो जाएगी इन मसल्स में, तो धीरे धीरे या थिन आउट, वीकनिंग, यहाँ तक कि ओवरलाइंग स्किन वगैरह वो भी ड्राई आउट करने लगती है, बिकॉज जो नर्व जा रही है लोअर मोटर में, उसमें ऑटोनॉमिक नर्व फाइबर्स भी होते हैं, राइट. एंड ऑटोनॉमिक नर्व फाइबर्स थ्रू दैट नर्व आल्सो सप्लाइज द ब्लड वेसल्स टू दैट एरिया. ठीक है. अब जैसे रेडियल नर्व है, मीडियन नर्व है, तो ये जो पामर आर्टीरियल आर्च है, देयर आर वेसल्स आल्सो इन द पाम, उसके वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन, वेसो डायलिटेशन के लिए जो फाइबर्स है, वो भी तो नर्व्स के थ्रू आ रहे हैं, राइट. तो जब आर्टरियल सप्लाई डिमिनिश हो जाएगी, तो फिर वहां पे स्केलिंग ऑफ द स्किन शुरू हो जाएगी, ड्राइंग ऑफ द स्किन शुरू हो जाएगी, ये सब प्रॉब्लम्स और आती थी. तो रिएक्शन ऑफ डिजेनरेशन विल बी सीन हियर. तो रिएक्शन ऑफ डिजेनरेशन विल नॉट बी सीन इन दिस. ठीक. अपर मोटर न्यूरॉन इंपल्स आ रही है, मसल टोन मेंटेन है इसमें, ठीक है, बराबर टोन इंक्रीज्ड. देन टेंडन रिफ्लेक्सेस आर एब्सेंट. सिंपल सी बात है, जो नर्व सप्लाई है मसल की वही कट गई है, तो अब उसमें इंपल्स नहीं जाएगा, तो टेंडन रिफ्लेक्सेस आर एब्सेंट. यहां पे रिवर्स है, देखो, जब टोन इंक्रीज हो गई तो एनी टेंडन रिफ्लेक्सेस रादर विल बी एग्जैजरेटेड, नॉर्मल से ज्यादा एग्जैजरेटेड हो जाएंगे. ठीक है. हाइपर रिफ्लेक्सिया, टेंडन ऑफ नी जर्क देखा कभी, अपर मोटर न्यूरॉन में जरा सा टैप करोगे, बिल्कुल फुट एकदम किक मारता है, तो दैट इज कॉल्ड एग्जैजरेटेड हाइपर रिफ्लेक्सिया. ठीक है. तो रिफ्लेक्सेस विल बी एग्जैजरेटेड इन अपर मोटर न्यूरॉन्स लीजन में. लिमिटेड डैमेज एक्सटेंसिव. अब देखो, यहां अभी तक यू वर फाइंडिंग कि इसमें ज्यादा नुकसान चल रहा था, है ना.
लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें लिमिटेड डैमेज है, प्रिसाइज डैमेज है। अगर रेडियल नर्व रिस्ट यानी कि रेडियल नर्व लेट्स से कि बिहाइंड द एल्बो और अबव द एल्बो डैमेज होती है तो एक्सटेंसेस बिलो द एल्बो ही तो जाएंगे सारे, ठीक है, यानी यू विल हैव अ रिस्ट ड्रॉप। तो एक ही पर्टिकुलर एरिया में आपको प्रिसाइज जिसे कहते हैं याद करो, वो सिंपैथेटिक ने पैरासिम्पैथेटिक वाली जो बात बताई थी, पैरासिम्पैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स आर वेरी स्मॉल, सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स आर लॉन्ग, ठीक है। तो सिंपैथेटिक में डिफ्यूज रिस्पॉन्स आता है, जैसे ही रेज हुआ एकदम गुस्सा आया तो यू नो टेकिकार्डिया, ब्रेथलेसनेस, नेजल डायलेटेशन ऑफ द नेयर्स, डायलेटेशन ऑफ द प्यूपिल, बहुत सारी चीजें होने लगती हैं और साथ साथ कंस्ट्रिक्शन ऑफ द स्फिंक्टर्स। लेकिन पैरासिम्पैथेटिक में बहुत स्मूथ होता है, लाइक यू सिट फॉर अ मैच्योरेशन, then everything is being normal, the only function is being urination happening at that time, so precise। तो यहाँ पे भी यही वाली बात आ गई, क्योंकि एक पर्टिकुलर नर्व का डैमेज हो रहा है लोअर मोटर न्यूरॉन में, तो वही पर्टिकुलर मसल या वो ग्रुप ऑफ मसल का ही तो नुकसान हो रहा है। इसमें क्या है, हायर सेंटर पे हो रहा है ना, ये विद इन द सीएनएस इंजरी हो रही है अपर मोटर न्यूरॉन की, तो डैमेज विल बी एक्सटेंसिव, यानी उस सेगमेंट पे जितने भी न्यूरॉन्स हैं वो सब जा रहे हैं, ठीक है। सो डैमेज विल बी एक्सटेंसिव, ये चीज यहां पे मिली तुम्हें कि ये इंपॉर्टेंट है। ओके, इप्सिलेटरल होगा, ये मोस्टली कॉन्ट्रालेटरल, इसका कॉन्सेप्ट अभी तुमने कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट में ही समझ लिया है भाई। वंस द न्यूरॉन इमर्जेस आउट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड थ्रू द वेंट्रल नर्व रूट्स, तो स्पाइनल कॉर्ड से तो कोई मतलब ही नहीं रहा ना, बिकॉज द इफरेंट पाथवे। अब अगर हमने नर्व स्प्लाइस भी कर दी तो फिर इप्सिलेटरली होगा टू दैट पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ मसल्स। रिमेंबर बेल्स पैरालिसिस is lower motor neuron lesion of the facial nerve, स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन के बाहर कोई इंजरी होती है तो दैट पर्टिकुलर हाफ, द सेम इप्सिलेटरल हाफ ऑफ द फेस विल बी पैरालाइज्ड। तो लोअर मोटर न्यूरॉन में द डैमेज इज इप्सिलेटरल, ठीक। देन इसमें अभी देखा तुमने, अगर मान लो कि स्पाइनल कॉर्ड में अगर जैसे लेट्स से कि कोई भी लेवल पे इंजरी होती है एंड देयर लाइक से अगर हम लोअर लिम्स की बात करें तो द spinal segment supplying the lower limb, they are actually present in the conus medullaris and a little above, let's say T11, T12, L1 vertebral level, that is the place where you find ki lumbar enlargement। देन उस लेवल पे अगर कोई इंजरी होगी तो फिर वहां से जो फाइबर्स हैं, यानी कि अभी यहाँ पे कॉन्ट्रालेटरल वर्ड यूज क्यों किया गया है, लेट मी टेल यू। ये जो इंजरी हो रही है ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स के लेवल पे बात हो रही है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स पे, यानी कि बिफोर डिकसेशन। अगर बिफोर डिकसेशन यानी पिरामिडल डिकसेशन जो हो रहा है लोअर मेडुला पे, सो लाइक सेरेब्रल आर्टरी जैसे अभी बताया था, मिडिल सेरेब्रल आर्टरी सप्लाइज द सप्रोलेटरल सरफेस, उस पे कोई इन्फेक्शन हो गया राइट साइड में तो उसका डैमेज किधर शो होगा, रिप्रेजेंटेशन होगा लेफ्ट साइड में, अपोजिट हाफ में, ठीक है। बिकॉज 80% फाइबर्स फ्रॉम द राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर फ्रॉम द मोटर कॉर्टेक्स are being decussated at the level of medulla and are reaching to the contralateral half of the spinal cord। तो अगर राइट साइड पे डैमेज हुआ सेरेब्रल कॉर्टेक्स के लेवल पे यानी कि बिफोर डिकसेशन, सो द डैमेज विल बी contralateral। the results of the injury will be reflected in the muscles of the contralateral side in case of injury of upper motor neurons before decussation। so that's why यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है, देखो वर्ड लिखा गया है, not simply contralateral, mostly means जरूरी नहीं है, अगर जैसे मैंने बताया ना डिकसेशन के बाद होगा
जैसे कि मैंने अभी बात इनिशिएट करी थी कि लंबर स्वेलिंग है स्पाइनल कॉर्ड में, इंजरी हो गई लेट्स से कि T11 लेवल पे, तो फिर इप्सिलेटरली होगा। 80% फाइबर्स तो अब वहां से उसी एंटीरियर हॉर्न में इनर्वेट कर रहे हैं ना, ओनली 15% वर कमिंग फ्रॉम द अपोजिट साइड। ठीक है, तो फिर इसी वजह से देखो स्टिमुलेशन कंप्लीट लॉस नहीं हुआ, क्योंकि 15% तो उसी सेगमेंट पे एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट से आ रहे थे ना, तो 15% फाइबर्स तो इंटैक्ट रहे ना। तो इस वजह से क्या है कि मोस्टली वर्ड यूज किया गया है कॉन्ट्रालेटरल, क्योंकि अगर स्पाइनल सेगमेंट के लेवल पे होगा तो भी कंप्लीट सेंसरी लॉस नहीं होगा, सेंसरी या मोटर कंप्लीट मोटर लॉस नहीं होगा। बट सुप्रा न्यूक्लियर जैसे कि सुप्रा डिकसेशन बिफोर द डिकसेशन ऑफ फाइबर्स बिफोर लोअर मेडुला इन द सेरेब्रल कॉर्टेक्स इंजरी होगी तो इट विल बी मोस्टली कॉन्ट्रालेटरल। बेबेनिस्की साइन ये बहुत बार पढ़ चुके हो तुम, बताया गया है S1 स्पाइनल सेगमेंट को इलिसिट करते हैं फ्रॉम द हील टू द लेटरल बॉर्डर ऑफ द फुट, यू नो, देन दे विल बी नॉर्मल जो होता है, देयर विल बी फ्लेक्शन ऑफ टोस एंड ग्रेटर टो एज वेल। बट इन केसेस ऑफ Babinski positive, there will be fanning of the little toes and dorsiflexion of the greater toe. That is called Babinski sign positive, which is a sign of upper motor neuron paralysis. एंड बेबेनिस्की साइन नेगेटिव होगा, लोअर मोटर भाई इसमें रिफ्लेक्स ही नहीं आता है, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया, रिफ्लेक्सेस तो इसमें खत्म हो जाते हैं ना, टेंडन रिफ्लेक्सेस आर एब्सेंट। तो चाहे बेबेनिस्की हो, चाहे एंकल हो, चाहे नी जर्क हो, रिफ्लेक्सी तो है ये भी, तो बेबेनिस्की साइन विल बी नेगेटिव, बट हियर इट विल बी पॉजिटिव बिकॉज ऑफ हाइपर रिफ्लेक्सिया, एग्जैजरेशन, एग्जैजरेटेड रिफ्लेक्सेस। ठीक है, इसमें क्या है, ऑल सुपरफिशियल एंड डीप रिफ्लेक्सेस आर लॉस्ट ड्यू टू डैमेज टू मोटर पाथवे। सिंपल सी बात है, वो पहले ही बता दिए कि जब नर्व सप्लाई ही कट गई मसल के लिए तो ऑल सुपरफिशियल एंड डीप रिफ्लेक्सेस विल बी लॉस्ट। इसमें क्या है कि अपर मोटर न्यूरॉन में सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस लाइक एब्डोमिनल reflex, cremasteric reflex, plantar are lost due to damage to the corticospinal tract. ठीक, देखो ये एग्जैजरेशन जो आ रहा है ये एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट्स की वजह से आ रहा है, ठीक है, लेकिन हमने बताया ना रिफ्लेक्सेस आर एग्जैजरेटेड इसमें, लेकिन यहां पे लिख दिया इन्होंने कि सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस लाइक एब्डोमिनल, क्रीमास्ट्रिक, प्लांटर आर लॉस्ट ड्यू टू डैमेज टू द कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। एज जस्ट नाउ आई टोल्ड यू दैट एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट जो है वो बेसिक्स मेंटेन करता है बॉडी को, यानी आपको इरेक्ट पोस्चर में खड़े रखेगा, एंटी ग्रेविटी, यू आर नॉट फॉलिंग डाउन। मैंने एक बार और पहले बात करी थी, इफ यू आर डेड यू फॉल डाउन, if you're standing that means your nervous system, your extra pyramidal activity is happening, your muscle tone, your balance is, you know, ये सब बता चुका हूं, अभी सब मेंटेन करके रखे हुए आपकी muscle tone and posture, so that means extra pyramidal is awake and you are standing erect. तो that means कि ये deep inside work कर रहे हैं muscles के लिए, ठीक है, बट ये जो सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस हैं वो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट ही कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो जो सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस हैं वो चले जाएंगे अपर मोटर न्यूरॉन पैरालिसिस में, लेकिन जो एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट है उसकी वजह से जो डीप रिफ्लेक्सेस हैं वो एग्जैजरेटेड हो जाते हैं। अभी बताया नी जर्क हो गया, बाइसेप जर्क हो गया, ब्रेकियोरेडियालिस का जर्क हो गया, टेंडो एक्लिस का जर्क हो गया, दीज जर्क विल बी एग्जैजरेटेड इन केस ऑफ अपर मोटर न्यूरॉन लीजन, याद रखना। लेकिन सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस जैसे एब्डोमिनल रिफ्लेक्स, क्रीमास्ट्रिक रिफ्लेक्स, प्लांटर रिफ्लेक्स, they will be lost because of the cortico damage to the corticospinal tract. ठीक, then may affect single muscle group as in poliomyelitis and Bell's palsy. ठीक, ये भी तो मैंने बताया, पोलियोमाइलिटिस में पहले ही बढ़ा चुका हूं मैं, वायरल इन्फेक्शन invading the anterior horn cells, ये होता है ना पोलियोमाइलिटिस।
after being emerging from the brainstem. तो बेल्स पाल्सी या ये पोलियोमाइलिटिस देयर एग्जांपल ऑफ लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन. तो इसमें सिंगल ग्रुप ऑफ मसल्स जिसके लिए वो सप्लाई थी, वो मसल्स पैरालाइज हो जाएंगे. ठीक. इसमें क्या होगा, अपर मोटर न्यूरॉन में अफेक्ट्स मेनी ग्रुप ऑफ मसल्स एज इन हेमीप्लेजिया, हाफ ऑफ द कंप्लीट हाफ ऑफ द पैरालिसिस, हाफ ऑफ द बॉडी में पैरालिसिस हो गया. Damage to the corticospinal tract removes the inhibitory effect on the superficial reflexes. ठीक है, resulting in Babinski sign positive. ठीक है. अभी ये देखा अपर मोटर न्यूरॉन्स में मेनी फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या होता है, एक ही ग्रुप ऑफ मसल पैरालाइज होगी जिसको इनर्वेट कर रहे हैं. यहाँ पे तो पूरा ट्रैक चला रहा था, ऊपर से इंजरी हो गई अपर मोटर न्यूरॉन में. ठीक है, तो कंप्लीट हाफ ऑफ द अपोजिट साइड तो जाएगा, अपोजिट साइड हेमीप्लेजिया हो जाएगा. मेनी ग्रुप्स में एक्चुअली इन्वॉल्व हो जाएंगे. बट इसमें क्या है कि जो हाइपर रिफ्लेक्सिया का जो इस कॉजेस बताया है, क्योंकि इसमें कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट रिमूव्स द एक्चुअली कॉर्टिकोस्पाइनल मैंने बताया ना, एक वॉलंटरी स्किलफुल एक्टिविटीज के लिए होता है. इनवॉलंटरी स्किलफुल एक्टिविटीज कैन बी डन ओनली व्हेन यू आर इनहिबिटिंग द एंटागोनिस्टिक्स, राइट. एक्सटेंसर्स को इनहिबिट करेंगे, फ्लेक्सर्स को स्टिमुलेट करेंगे, तभी तो एक स्मूथ फंक्शनिंग आएगी. ठीक है, तो damage to the corticospinal tract removes the effect inhibitory effects, जिसकी वजह से क्या है, जो सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस हैं वो हाइपर उसमें वो रिफ्लेक्स और ज्यादा प्रोनाउंस हो जाएगा, रिजल्टिंग इन बैबिन्स्की साइन पॉजिटिव. ठीक है, तो ये चीज तुम्हें पता होनी चाहिए कि ये जो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट है, for the smooth functioning, it actually is stimulatory to that particular flexor group of muscles, as well as it is inhibitory to the antagonistic muscles of that same joint. और ये काम इंटरनेशनल न्यूरॉन्स भी कर रहे थे उस टाइम, हेल्प कर रहे थे. अपार्ट फ्रॉम आई टेल यू रूब्रोस्पाइनल एंड एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट भी इसमें मीडिएट करता है स्मूथ फंक्शनिंग. लेकिन कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट अगर स्लाइस हो गया है तो फिर ये इनहिबिटरी इफेक्ट जो आ रहा है एक्सटेंसर्स पे वो चला जाता है, और उसकी वजह से बोथ फ्लेक्सर एंड एक्सटेंसर दे गेट स्टिमुलेटेड. तो कॉन्ट्रैक्चर वाला स्टेज आ जाता है, जैसे कहते हैं स्पास्टिक पैरालिसिस. So there is loss of control on lower motor neurons, which becomes hyperactive, leading to spastic paralysis. अब एक चीज समझ में आ गई है. तो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट स्मूथ फंक्शनिंग के लिए है, फ्लेक्सस को स्टिमुलेट करेगा, अल्फा एंड गामा न्यूरॉन्स जो फ्लेक्सस के लिए हैं, एट द सेम टाइम एक्सटेंसर्स को इनहिबिट करेगा. अब ये स्लाइसिंग हो गई अपर मोटर न्यूरॉन में, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट कट गया है. ठीक है, देयर इज इंजरी टू द कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट हायर लेवल पे. बट एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट अगर इंटैक्ट है, वो तो स्टिमुलस जा रही है, और जो कॉर्टिकोस्पाइनल, क्योंकि वो भी फ्लेक्सस को स्टिमुलेट कराएगा, लेकिन इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन द एक्सटेंसर्स खत्म हो गया. तो फिर क्या है, बोथ फ्लेक्सर्स एंड बोथ एक्सटेंसर्स विल बी एक्टिंग ऑन द सेम जॉइंट. आईपी जॉइंट जैसे बताया, रिस्ट जॉइंट बताया, एल्बो, कोई भी जॉइंट पे you have like both flexors and extensors, if both are getting stimulated, तो फिर क्या होगा भाई, इस रिस्पॉन्स हाइपर एक्टिव हो जाएगा, स्पास्टिक कॉन्ट्रैक्शन मसल्स हो जाएंगी. ठीक है, स्पास्टिक पैरालिसिस हो जाएगी. ये चीज समझ में आ गई, तो इसको अच्छे से याद कर लेना. 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है तुम्हारा, और इनफैक्ट क्वेश्चन के पर्पस के हिसाब से भी रट सकते हो, समझ सकते हो, बट मेक श्योर इफ यू अंडरस्टैंड थिंग, दिस विल हेल्प यू अ लॉन्ग टाइम. पूरा मेडिसिन एंड सर्जरी में भी, पीडियाट्रिक्स में भी काम आएगा. एंड अभी भी ये कंप्लीट नहीं है इफ यू डोंट रीड द फिजियोलॉजी ऑफ दिस upper motor and low motor neurons. I have like tried to convey from the anatomical point of view, but both nervous system in anatomy and physiology, if you read side by side both together, then it will help you more. Okay, so I think time is up for today, and there was more to
will start with the extra pyramidal tract after this, after post lunch. Okay.